Yeah, I used the hooks. Which which hooks you have used? दिस इंटरव्यू इज़ कम्प्लीटली इन इंग्लिश, बट इसके बाद में हम इसको हिंदी में लास्ट में एनालाइज करेंगे. Okay. Why we will use React? Like what purpose it serves in web development? What can you explain? Why we use React? Actually, React is helps to create the single page application, and also it helps to create the component based. Whereas Mhm. the different other frameworks are different, Mhm. and also it will helps the users to write the JSX HTML in the JavaScript Mhm. JSX format. Mhm. And also it is a used virtual DOM, whereas it runs the faster, it renders the pages faster, and also helps to search engine optimization. Okay. So you talked about like HTML in JavaScript, or you said JSX. So is JSX HTML, or how it is different? Yeah, it is a different. Actually, we are writing the HTML in the JavaScript. Okay, you are writing HTML in the JavaScript, so that will be called Yeah, JSX. JSX, JavaScript XML. Okay. If it is like HTML, then why we change like class to class name and some other things? Like if I didn't you, get it. Your question. yeah, if you write JSX, you have seen that people will not write class. Like for styling, for CSS, people Yeah, yes. in JSX will not write class and they will put class name. Class class. And also, if you will see, you will put on click functions. Yeah, Yeah, on click functions. on click function. So in on Yeah, click function also in JSX, if you have noticed, on click is in camel case. yeah, On, camel case yeah. in the React. But in HTML, if you see on click, it is in lower case. Then normal lower case. Yeah. So why this difference? Yeah, exactly. I don't know about that answer. I didn't much consider it also. Okay, okay, okay. What kind of components have you worked more on? Function or class? Yeah, I mostly worked on the functional components. Okay. In functional components, you must have used some hooks. Yeah, I used the hooks. Which which hooks you have used? Yeah, I used use state, use effect, use ref, use memo. Sometimes I use memo to memorize Okay. the values. Okay. So what does the use memo use for? Yeah, yeah. Actually, use memo is helps to memorize the values, and it will helps to the perform the uh, uh, I mean optimize perform the our app also. Okay. You said it will improve performance. Like why, Yeah, like how it performs? Like what are few things use memo will do? yeah. Use memo is there actually use memo. Yeah, you can take your time. Like what is, what it will memorize? What it will memorize or memorize? Actually, this memorize it. It's previous value, I think. Exactly. Previous value of which thing? I don't know. I am not remembering. Another common hook which you will generally use is use state. Yeah. Yeah, you did. So in use state, you change some state. Okay. Yeah. So if you change some state in a statement, you are changing some state. Can you use that state in the next line? Just next line. Suppose you have used use state hook, and in use state you get a function to setting the state. You get two things. One is state variable, one is the function to change the state. Yeah, in use state. Yeah. So suppose you have a use hook to change name. So you will have two variables, name and set name. Yes. Set name. Yeah. Yeah. So I am saying if you use set name to change the name, can you use that name, new name, in the next line?
or is there some problem with state, like you have to wait for some time, or you can use directly after that line the new value of the state? Actually, there is a. I mean, actually, we can't use the hooks directly before return value. Okay. Yeah, you need to set the hooks well in before before the return values only. I mean, set values. Okay. Actually, I didn't get question correctly. Okay. Okay. I'll ask it in a different way. Like, do you think set state, this function, set name or whatever we call it, is this a synchronous function? Will it immediately change the state, or it will take Yeah, some time, or it is a async function? What do you think? yeah. Actually, set state is asynchronous value. Mm-hmm. Yeah, it's run sometime after some time. Okay. So if you want to immediately change value, do you have some method, or do you do some special thing to get immediately that value? The value, I don't know. I think user of that much. Okay. So you Previous. talked about like useref. How you have used useref anywhere in your project, or? Yeah, user of helps to access the DOM elements, access the elements of the DOM directly, and also it will helps to access the previous value, where we can use and also whereas we can use the focus on apply the input form elements. Mm-hmm. So it is, what is the main purpose you think, like to access the DOM elements, you said? DOM elements. Okay. Yeah. If without useref, can we access DOM elements in React anyhow? In function components, obviously. Yeah, functional. Is there a way we can access without using useref hook DOM elements, or is it the only way? Yeah, we can access it using the values. I mean, event handlers like that. Yeah. Okay. But event handlers also, like in that function, you will write something. So Yeah. how you will use it? Event, through event object, you're saying? Not event object. Well, I don't have correct answer this question. Yeah. You are partly correct. You you can use event object somehow, because that has a Yeah. target value, but works only for, Yeah, event dot target values, event dot target values. yeah, but that only works for accessing events, not the DOM. Mm. Okay. So I'll ask a little bit about context API. You are aware of it? Yeah. Yeah, yes, I have read. Mostly used the Redux only. Okay. Okay. So why is context API famous? Why it is used? Yeah, actually, it helps to use the store the data in global state. Mm-hmm. Actually, it also helps to avoid the prop dealing. Yeah. Yeah. So, like, what is this prop drilling? Yeah, prop drilling is a passing from the one component using the props. We can pass the one component to another component, one component. It will go for the hierarchically. It will Mm-hmm. become the headache for us passing accessing the data from one component to one component, from one component to civilian component to another component. Like if we state the data in the globally, we can access the data from any component using the use state. So which hook you will use to access it? Context? Yeah, you use context. Okay. So can we use more than two contexts? Like, can we use many contexts in same application? I think no, I didn't use it till now. Okay, so you have used only one context globally? Yeah, I used one context only. Okay. Okay. So if you know about context, what is context provider? Actually, context provider provides the entry of the main parent. After that, it will parent to the one component, and whereas it will provide it to the child components data. Okay.
So if you somehow don't write provider, what is the problem you will face? I didn't that much tested. Okay. So Actually, I used it in the when I practice in the projects only. After that, I worked on the Redux. okay. So you are talking about Redux. What is the difference between this context API and Redux? What is one difference you find? Yeah, actually, context API is used to the in a small application, whereas the Redux is helps to use it in the big applications. And also it is their internal context API is there internally in the React, whereas the Redux is a third-party library we need to import from it. Okay, so that is the difference between both libraries. Like one is available, one. But is there any feature you found in Redux which is not in this context API? Like when you used context API, have you used reducers? Use reducers we use use reducers. Okay, so with context API, you have used use reducer or Yeah, no. okay, No. differently. Yeah, differently. Okay. So for Redux, I'll ask you, what is dispatch? What is the purpose of dispatch? Yeah, actually, dispatch helps to dispatch the events or actions to events to the dispatch the actions, and actions will actions. Okay. So it dispatches the actions. So what is advantage of using dispatch instead of using any function which changes state in that component only? Like if you write some function to change the state in that component and instead of that you place dispatch. So what is one benefit you find in this approach? Actually, I don't have answer for this one. Okay, no issues. So Can now I'll ask you very simple questions about API. yeah, Okay. okay. So which method or which thing you have used or library you have used to access API in React? Yeah, I And used the Axios weather library. okay, you used Axios. Axios. Okay. Yeah, Axios library. So what kind of methods are provided? Like what kind of HTTP method you use generally to get the data? Yeah, there are the HTTP methods. There are two methods. I mean, methods are there. Get method, post method, update method, put method, patch method. Okay. Now, in Axios, what happens when you get the data and it fails? Like if you call an API and if it gives you some error, what happens? Like, will it give you an error? How it gives you? Just like give any example of in your project what you found, what kind of error you found. Yeah, actually, use the async and wait, and I will it will go to the catch the error, and I can use the type of errors. I mean, depend upon the APIs. Okay. API code. Okay. Have you tried calling more than one API at a time? Like, have you tried any time to call? No, I didn't call. No, I didn't call, but I have some idea to use it. Promixa.all. Okay, in We can use it. promise.com. Promise. Okay, Yeah, we can use it for it APIs. okay, Multiple APIs. okay. So, what is the difference between promise and async await? Like, what you found? Yeah, actually, both are perform the asynchronous operation, whereas promises has the three operations resolved and rejected and pending. It will has async and wait are the provide. It also introduced in the ES6. Actually, it perform whenever we need to use the await, we need to use the perform. First of all, apply the async operation, the function. Yeah, there is a two. It is a easy to the then promises. Just the optimization of the promises, asyncs and waiter. Okay, it's a optimization. It's easy to use. You are saying. I mean, easy to use up async and waiter. Then the promises. Okay.
fine. So any library you have used with like React? So you have used React, you have used Redux. Any other library, front-end library you used during your development? Yeah, not. I used a framework like Bootstrap that way. Okay, Not that is like a CSS thing. But yeah, any CSS thing. JavaScript library with React you have used? Yeah, I used sometime imported the React cursols. What is that? React? Cursols. Okay, okay. React cursols. And I mean, I used some the loading. I mean, spinner. Okay, okay. So React spinners. basically, React UI components. Yeah, UI components. Okay, okay. So any other framework do you know apart from React? And Yeah, I don't know. okay, I okay, don't know. okay. So can React be called an MVC framework? If you know what is an MVC? Yeah, I heard about it that much. I didn't know full form about it. तो अब हम कर रहे हैं इंटरव्यू का एनालिसिस। तो यहाँ पे ये ध्यान देना होगा कि एक फ्रेशर का इंटरव्यू था, तो उस हिसाब से ही हम अजम्पशंस लेके चलेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स टू कैंडिडेट जिन्होंने अपना टाइम दिया और काफ़ी सारे फीडबैक्स भी हमको दिए। तो कुछ क्वेश्चन आए थे जैसे कि व्हाट इज़ रिएक्ट या रिएक्ट क्या करता है, आप क्यों यूज़ करते हो इसको। उसके बाद में ऐसा ही एक और क्वेश्चन था कि हुक्स क्या होते हैं, कौन से हुक्स आपने यूज़ किए हैं, कॉन्टेक्स्ट एपीआई क्या है, या फिर लाइब्रेरी कौन सी है रिएक्ट में। तो इन सब क्वेश्चंस में खास बात क्या थी कि ये सब बहुत ही ओपन एंडेड क्वेश्चन थे। ओपन एंडेड से मतलब है कि आप इसमें जो भी आंसर दे रहे हो, आप उसमें पूछा नहीं गया कि किस लिमिट तक आंसर दोगे। तो यहाँ पे जो एक चीज़ इम्प्रूव की जा सकती थी वो थी कि आप अगर रिएक्ट के बारे में बता रहे हो तो आप अपने एक्सपीरियंस ऐड कर सकते हो। मतलब यूआई लाइब्रेरी तो है, डिक्लेरेटिव भी है, लेकिन आप बता सकते हो कि मैंने इससे अपने प्रोजेक्ट में ये कंपोनेंट्स बनाए, ऐसे कंपोनेंट बनाए, या फिर मैं इसको ऐसे यूज़ करता हूँ। ऐसे ही हुक्स में भी आप बता सकते हो कि ये वाला जो हुक है वो मैंने सबसे ज़्यादा यूज़ किया है, या फिर ये जो पॉपुलर हुक्स हैं मैं प्रोजेक्ट में ऐसे यूज़ करता हूँ। ऐसे ही कॉन्टेक्स्ट एपीआई, अगर कोई चीज़ आपने नहीं यूज़ की है तो मना किया जा सकता है। लेकिन जब भी ऐसे कुछ ओपन क्वेश्चंस आते हैं जिसमें कि आपकी तैयारी अच्छी है या आपको पता ही है कि ये डेफिनेशन से रिलेटेड है, तो वहाँ पे आप अपने प्रोजेक्ट का या रियल में किए हुए किसी प्रैक्टिकल एग्जाम्पल का कॉन्टेक्स्ट ज़रूर बताइए। थोड़ा सा टाइम इंटरव्यूअर के पास हमेशा होता है, एक दो लाइन आप ऐड कर सकते हैं। मतलब आपको पूरा प्रोजेक्ट एक्सप्लेन करने की ज़रूरत ही नहीं है। वो अगर आपसे रिएक्ट पूछ रहा है तो आप बता सकते हो कि रिएक्ट ये करता है और मैंने इसमें ये बनाया है। अगर उसको इंटरेस्ट होगा तो उससे आगे आपको पूछ लेगा उससे रिलेटेड क्वेश्चन। तो इससे फायदा आपका ही है क्योंकि आपके जोन से वो अब क्वेश्चन पूछ रहा है। अब नेक्स्ट टाइप के कुछ सवाल पे चलते हैं। जैसे कि मैंने JSX के बारे में बात की थी। अब JSX क्या है वहाँ तक चीज़ें सही थी। फिर मैंने पूछा ये HTML है या नहीं और HTML से कैसे अलग है। तो मैं कुछ हिंट देने की कोशिश कर रहा था जिसमें मैं बताना चाह रहा था कि JSX जावास्क्रिप्ट ही है, इसीलिए ये इस तरह की चीज़ें हम नहीं लिख पाते कि क्लास से वगैरह कीवर्ड। बट ऐसी कोई चीज़ में अगर आपको लगे कि ये कॉन्सेप्ट मेरे को पता ही नहीं है तो आप मना भी कर सकते हैं ताकि इंटरव्यूअर और आगे नहीं जाए। पर कई बार अगर आपको थोड़ा सा डाउट आए कि शायद आपको ये चीज़ पता है तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं इंटरव्यूअर से, वापस पूछ सकते हैं कि क्या एक्सप्लेनेशन चाहिए और उसके बाद अपना आंसर प्रिपेयर कर सकते हैं। ऐसा कई जगह हुआ है, जैसे हुक्स में सही आंसर शुरू में, उसके बाद में यूज मेमो, थोड़ा सा डायरेक्शन सही जाते हुए उसके बाद में हम आगे जब उसको एक्चुअल प्रैक्टिकल में पूछना चाह रहे हैं तो वहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है। तो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल जो आपने किया हुआ है उसी में आप ज़्यादा डिटेल में जाएं, वरना वो कीवर्ड्स आप यूज़ तो ले सकते हैं लेकिन आप कह सकते हो कि मेरे को बस ये पता है बट मैंने एक्चुअली इसको यूज़ नहीं किया है। तो ये भी एक अच्छी स्ट्रैटेजी है। इसके अलावा जैसे यूज स्टेट के बारे में हुआ था तो यहाँ पे क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं था। जनरली जैसे आप डॉक्यूमेंटेशन कहीं पे या तैयारी करके जाते हो तो सिंक एसिंक आपको पता होता है कि स्टेट एसिंक है अगर आप तैयारी किए हुए हो तो, लेकिन अब उसको अलग तरह से पूछ लिया गया कि भाई आपने स्टेट जैसे ही चेंज की क्या उसके तुरंत बाद आप उसको यूज़ ले सकते हो। तो यहाँ पे थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग का सवाल आ गया कि ये बेसिकली सिंक असिंक ही पूछ रहा है। लेकिन हाँ, वापस से आप क्वेश्चन कर सकते हो, जैसे पॉज करके कैंडिडेट ने यहाँ पूछा भी था, उसके बाद मैंने उसको चेंज किया, उसके बाद उसको थोड़ा समझ में आया। तो इस तरह से चीज़ें चलती हैं इंटरव्यू में।
इसके अलावा यूज रेफ में भी ऐसा कुछ हुआ था, थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन हमने दिया, उसके बाद में हमने कहा कि कोई अल्टरनेट तरीका है क्या डोम को चेंज करने का यूज रेफ के अलावा। तो अल्टरनेट तरीका वैसे तो है ही डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट ID, बट वो तरीका आप बता भी सकते हो या फिर बताते हो कह सकते हो कि उस तरह से तो कर ही सकते हैं, पर वो एक गलत तरीका है। बट ये चीज़ें ऐसी हैं कि जहाँ पे अगर आपने वो चीज़ ट्राई की हुई है तो आप आराम से बता पाएंगे, नहीं आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं हो रहा है तो आप रिजेक्ट भी कर सकते हैं, जैसा इस इंटरव्यू में भी कई बार हुआ। कॉन्टेक्स्ट API का कुछ क्वेश्चन आया था जिसमें कि थोड़ा सा अच्छा ये मोमेंटम बिल्डअप हुआ, जिसमें कि कैंडिडेट ने कॉन्टेक्स्ट API थोड़ा बताया और प्रॉप ड्रिलिंग की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, तो वो अपने कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से भी बता रहा होगा। और उसमें अच्छा होता कि वहाँ पे भी और ऐड किया जाता कि मैंने भी ऐसे प्रॉप ड्रिलिंग हटाई थी, बट अगर ऐसा नहीं है तो आपने सॉल्यूशन बता दिया, दैट्स इनफ। उसके बाद यूज कॉन्टेक्स्ट पे भी बात गई थी, लेकिन अब थोड़ा सा और आगे हम बढ़े और ऐसा होगा कि इंटरव्यू में अगर आप और अच्छा आंसर दे रहे हो तो उसी चीज़ के डीप में इंटरव्यूअर जाता रहेगा, तो इसलिए वो आंसर हमेशा आपके प्रोजेक्ट से रिलेटेड हो तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि उसमें तो आप काफ़ी कुछ कर चुके हो। तो यहाँ पे जैसे आप देखोगे तो कैन वी यूज़ मैनी कॉन्टेक्स्ट, ऐसी एक सवाल था। तो वैसे कॉन्टेक्स्ट आप कई यूज़ ले सकते हो, लेकिन अगर आपको बिल्कुल ही आइडिया नहीं है तो मना करना अच्छा रहता है, जैसा इसमें भी किया गया है। अब कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर के बारे में मैंने पूछा तो वहाँ पे भी आंसर थोड़ा सही था, उसके बाद मैंने कहा इसको रिमूव कर देंगे क्या, तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, बट इसमें भी आंसर है कि जो डिफॉल्ट क्रिएट कॉन्टेक्स्ट में वैल्यू दी थी वो। पर आपको नहीं पता तो रॉन्ग गेस लेके भी फायदा नहीं है, और अगर आप गेस करना चाहते हो मतलब आपको हाफ नॉलेज है तो आप बता दीजिए कि मैं गेस करता हूँ कि ये चीज़ है और मैंने एक्चुअली में यूज़ नहीं किया है। तो थोड़ा सा क्लैरिटी चाहिए थॉट्स की। ऐसे ही API, कॉन्टेक्स्ट और रिडक्स, इनके बारे में कहा गया था कि यार डिफरेंस है, तो डिफरेंस एक लेवल पे तो बता दिया गया, पर अगर आप और अंदर इसमें जाना चाहें, आपने यूज़ किया हुआ है तो ठीक है, नहीं यूज़ किया तो क्लियरली, क्योंकि रिडक्स यहाँ कैंडिडेट ने अच्छे से यूज़ किया था, कॉन्टेक्स्ट API केवल उसने पढ़ा हुआ है या देखा हुआ है थोड़ा बहुत, तो उस हिसाब से आप मना भी कर सकते हो, तो दैट इज़ अ वैलिड आंसर। एक क्वेश्चन आया था जहाँ पे API की बात चली थी, तो API में थोड़ा सा क्लियर नहीं था मेरी तरफ से कि कौन सी API मैं पूछ रहा हूँ। तो ये एक अच्छा पॉइंट होता है कि कहीं भी इंटरव्यू में ऐसी कोई भी टर्म अगर चीज़ पूछ ली है इंटरव्यूअर ने और आपको थोड़ा सा भी आइडिया नहीं है या फिर उसने ही आधी डिटेल दी है, क्योंकि ऐसा होगा क्योंकि इंटरव्यूअर एक कॉन्टेक्स्ट से चल रहा होता है और हो सकता है उसने चीज़ें बहुत ईजीली, आपने तो क्योंकि वो एक डॉक्यूमेंटेशन पर्सपेक्टिव से पढ़ी हैं, बट उसने बहुत अलग अलग तरीके से उसको यूज़ किया होगा, तो वो पूछ सकता है। अब API में हो सकता है वो वेब API ही बोल रहा हो लेकिन आपको नहीं समझ में आए, तो आप क्वेश्चन कर सकते हो कि कौन सी API है। इस केस में मेरा भी कॉन्टेक्स्ट सेम था, जो कैंडिडेट ने आंसर दिया उसका भी सेम केस था, उसने भी वही API बताई, तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। बट यहाँ पे आपको क्वेश्चन करना चाहिए अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो। ऐसे ही एक्सियोस, HTTP मेथड्स, इसके बारे में सही सारे आंसर जा रहे थे। फिर API के एरर से रिलेटेड मैंने थोड़ा सा पूछा, वो अगेन एक तरह से आपके प्रैक्टिकल एग्जाम्पल में घुसने की कोशिश थी, मतलब कि आपने कैसे एरर हैंडल किए थे, तो उसमें कुछ भी आंसर हो सकता है, एक तरह से वो ओपन ही है। पर ऐसी चीज़ों के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा अपने कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से, अपने प्रोजेक्ट के हिसाब से आप बताइए। अब प्रॉमिस, एसिंक, अवेट, इसमें डिफरेंस पूछा गया था जो कि आई थिंक काफ़ी ठीक आंसर था। तो इस इंटरव्यू की सबसे बड़ी मिस्टेक अगर कही जाए तो वो था कि कहीं पे भी इंटरव्यू में उतना बिल्डअप नहीं लिया गया जहाँ पे पॉसिबल था, क्योंकि कैंडिडेट ने ऑलमोस्ट सब एरिया से कुछ कुछ चीज़ें आंसर करी, बट अगर उसमें वो अपने प्रैक्टिकल एग्जाम्पल या थोड़ी और चीज़ों को डिटेल में एक्सप्लेन कर पाते तो वो एक मोमेंटम बन जाता, और ज़्यादातर इंटरव्यू का जो सेशन है वो इसी एक टॉपिक पे खत्म हो जाता। जनरली ऐसा ही आप चाहोगे, क्योंकि अगर इंटरव्यू में आपके प्रोजेक्ट या आप जो जानते हो उसके बारे में ज्यादा डिस्कस हो रहा है तो बेसिकली आप सक्सेसफुल हो रहे हो। और इसमें आपने देखा भी होगा कि कैसे बहुत सारे क्वेश्चन आए जो करेक्ट तो बताए गए थे लेकिन बहुत जल्दी से उसका आंसर दे दिया गया था। तो जल्दी से आंसर दे के खत्म करने से एक फ्लो भी कई बार टूट जाता है, क्योंकि आपने शॉर्ट में एक आंसर दे दिया, उसके बाद इंटरव्यूअर अब नया क्वेश्चन पूछेगा। अगर आप कुछ एड ऑन करते तो इंटरव्यूअर शायद और इंटरेस्ट लेता। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि हर चीज का ही ऐसे खींच के आंसर दिया जाए, लेकिन कई बार ऐसी पॉसिबिलिटी बहुत आसानी से होती है और जनरली आपसे बहुत ओपन क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आप ट्राई करें कि वन लाइन आंसर हमेशा ना दें। अब कोई चीज़ का आंसर वन लाइन है तो ठीक है, पर उसमें आप और ऐड ऑन कर सकते हैं। अगर आपके भी कुछ सवाल हैं और आपको डाउट्स हैं काफ़ी सारे, तो यहाँ कमेंट सेक्शन में पुट कीजिए ताकि उन चीज़ों को भी हम आने वाले कुछ वीडियोज़ में कवर करें।